evening and welcome viewers. Viewer 63-year-old Mukhtar Ansari, who has died of a heart attack, was not and will never be a hero or a Robin Hood. He was and will always be a convicted gangster, a ruthless mafia don, a man responsible for many killings, murders, extortion and loot. And like Atiq Ahmed, who also died a few months back, the story of Mukhtar Ansari is one of being the oppressor. An oppressor with political approval and the participation of political parties in Uttar Pradesh. Mukhtar Ansari and Atiq Ahmed are a blot in the political history of Uttar Pradesh and the political history of India. And as far as Mukhtar Ansari is concerned, let me say it as straight as I can. Being dead does not make him great. For years, for decades, people like Mukhtar Ansari and Atiq Ahmed have been built up like heroes by sections of the media, as Robin Hoods, as do-gooders, and an organized industry of Bollywood and Lutyens media have made glowing documentary on people like them. Puff piece interviews have been done with them, and even films have been made around them and people like them. And viewers, I come on air tonight to tell you that the death of Atiq Ahmed and Mukhtar Ansari means the end of an endless reign of mafia dons and smugglers and extortionists and underworld dons in India. Shameless people in our country, anti-national people in our country, people who can even sell their nation. These are people who have gone and watched cricket with Dawood Ibrahim, benefited from suspicious charity matches organized by underworld dons in the Middle East, and praised Mukhtar Ansari's biryani in his house. Today I come to you to request you to do everything that you can to let the younger generation of this country know how bad things were when the Congress, BSP and the SP were in power. Because it was not just Congress, BSP and SP in power, it was also Dawood Ibrahim, Yaqub Memon, Atiq Ahmed and people like Mukhtar Ansari who ruled the roost. And I can say to you tonight on this Friday evening, anything can be allowed to happen, but we must never go back to that India. This is a new India. And we're happy that the time of Mukhtar Ansari's and Atiq Ahmed's and Dawood Ibrahim's ruling the roost in this country has come to an end. Debate 1 tonight, viewers. Mukhtar Ansari and what I think he signifies. Debate number 2 this evening, the inside story of how there was a planted question at the UN and the US State Department, a planted question published by anti-India people to tarnish our image. Debate number 3, that's going to be an interesting angle. And debate number 3, why Pakistan is seeing the Chinese leave and can give no security guarantees as the Chinese prepare to leave Pakistan. That's debate number 3. And here are the headlines this Friday evening on the Debate Tonight. जिला गाजीपुर की मैं बात करूं तो वहां पे लोगों ने रात पूरे दिवाली मनाई। उन्होंने हमेशा कहा है कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हर एक दिन न्याय हमें जरूर मिलेगा। Gangster Mukhtar Ansari's death draws the curtains on his 4-decade reign of terror in Uttar Pradesh. इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। But the opposition demands a probe over the dreaded gangster's death, alleges conspiracy. They are calling me somebody who has a rate card. On the other hand, based on my, my choice of clothing, and on the other hand, they would go and do dharna for the rights of burqa, all of that. And then they call themselves liberals as well. Kangana gives it back to the Congress over the rate card slur, says the people of Mandi will give a reply. Congress gets fresh income tax notice to the tune of 1,700 crores. Party says we'll move the top court now.
After the United States and Germany, now the United Nations wades into the Kejriwal arrest row. And China halts 2 projects after deadly attacks on its citizens in Pakistan. And ladies and gentlemen, jailed gangster turned politician mafia don Mukhtar Ansari died after he suffered a heart attack in jail. The dreaded mafia don terrorized people in the Varanasi Mao belt. For politics and the polarization of votes, the opposition failed to address the severity of the criminal allegations against him. And today that same opposition is crying foul over Mukhtar Ansari's death, calling it a conspiracy. Ladies and gentlemen, the reality of what this man was all about must be known. We must all talk about it. Let's debate. A dreaded gangster, murderer, and extorter. The death of Don Neta Mukhtar Ansari has drawn curtains on his 4-decade reign of terror in eastern UP. Ansari earned notoriety in the crime world due to rivalry with another mafia-turned politician, Brijesh Singh, in the late 1980s. In 1996, he transitioned into politics, leveraging his influence to secure a seat as an MLA from Mau constituency for 5 times. वोटर लिस्ट में नाम है और कार्ड है, अगर इसके बाद कोई विरोध करता है तो हम तो रहबे करेंगे ना, खबर करिएगा, वो ले जाके मजिस्ट्रेट फांसी थोड़े लटका देगा. His tenure was marred by accusations of inciting communal violence and exploiting religious sentiments. चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा. मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा. During the 2005 riots, Mukhtar Ansari was seen carrying a firearm in an open SUV on the streets of Mau. Increased pressure on political parties after the cold-blooded murder of BJP MLA Krishnanand Rai led to Ansari's arrest in 2005, after which he never came out of jail. The dreaded gangster alleged threat to his life while in jail. मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है. 60 criminal cases, including 16 murder cases since 1978. But the convictions happened only in 2022. Such was his terror. स्वाभाविक है, उस समय सरकार मुख्तार को सपोर्ट कर रहे थे. मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पूरी तरह सपोर्ट था. जिस समय मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था, उस समय हमारा अकेले स्टैंड लेना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे सर्विस भी गंवानी पड़ी. इवन 2 बार जेल भी जाना पड़ा मुझे. लेकिन मेरा एक हौसला बुलंद था, ऊपर वाले भरोसा था. मैं बाहर आया और आज आप सबके बीच में सकुशल बैठा हूँ. और जो व्यक्ति सब कर रहा था प्लानिंग, आज वो खत्म है. The death of Mukhtar Ansari has given terrorized victims a sense of justice. कि एक आतताई का अंत हुआ, उसके एक युग का अंत हुआ है और उसके जितने आतंक रहे हैं. और मेरे क्षेत्र में मैं बात करूं या मेरे पूरे जिला गाजीपुर की मैं बात करूं तो वहाँ पे लोगों ने रात पूरे दिवाली मनाई. मैं तो ये शान की जिंदगी नहीं है, एक अपराधी की जिंदगी का यही हश्र होता है और उसी का ये नतीजा है. The question is, do we need to sympathize with someone who was accused of hundreds of crimes and made people suffer in the region? That's the debate. Why sympathize with Mukhtar Ansari's death? My first guest tonight is a former DSP of police in Uttar Pradesh, and he is the person who had invoked the Prevention of Terrorism Act against Mukhtar Ansari. And let me tell you, viewers, that when Shailendra Singh
had invoked POTA against Mukhtar Ansari, he did not have the support of the politicians. There were threats made against him. So it is only appropriate that the man who arrested Mukhtar Ansari is my first guest tonight. शैलेंद्र सिंह जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। नमस्कार अर्नब जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। उस समय जब आपने जी शैलेंद्र जी, आज मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे यंगर ऑडियंस है, बहुत लोग हैं जो जिनको पता नहीं होगा कि जिनको बाहुबली रॉबिनहुड कहा जाता था, उनका असली चेहरा क्या था। तो जरा आप उसके बारे में बताइए, और जब आपने एक्शन ली उसके बाद आपको क्या भुगतना पड़ा, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल बात सही है। कल जब मुझे ये सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही गूंजा कि जो जैसा करता है उसका कर्म फल उसको मिलता ही मिलता है, और इसी जन्म में मिलता है। और मुख्तार अंसारी ने अपने ही कर्मों की सजा पाई है। कोई उसने जो मतलब भय का साम्राज्य पब्लिक के लिए पहले कायम किया था, और पिछले 3 साल से जब से ये पंजाब जेल से यहाँ लाया गया उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे थे कि लगातार ये माहौल बना रहा था कि हमको जान का खतरा है, हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और इस नाते ये स्ट्रेटजी बना रहा था कि हमको यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए न्यायालय के हस्तक्षेप से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसका ट्रांसफर तो नहीं हो पाया। उसके पहले वो स्वयं कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हो गई। उसके अंदर एक भय व्याप्त हो गया था कि जो साम्राज्य हमने कायम किया है, वो साम्राज्य आंख के सामने मेरा सब खत्म हो रहा है। वर्तमान सरकार योगी जी की लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके संपत्तियों को जब्त कर रही थी, उसके लोगों को लगातार जेल भेजा जा रहा था, या एनकाउंटर में मर रहे थे, या देश छोड़ के भाग के भगोड़ा घोषित हो चुके थे। तो उसका सब कुछ तो खत्म हो रहा था, और वही डर उसके अंदर बैठ गया जिसके कारण उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो जिसने कर्म किया था वही फल उसको मिला है, और क्या बोलूं। शैलेंद्र जी, जब आपने उनको अरेस्ट की उस समय क्या रिस्पॉन्स था? मतलब पॉलिटिशियंस की सपोर्ट थी उनको? मैंने जो सुना है दैट यू वर टारगेटेड। व्यूअर्स, यू मस्ट रिमेंबर, शैलेंद्र सिंह इज द मैन। यस, प्लीज गो अहेड, आप बोलिए प्लीज। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जनवरी 2004 की बात है। और जब मैंने 25 जनवरी को इनसे लाइट मशीन का रिकवरी किया, इनके फोन कॉल्स हम लोग सुन रहे थे, और उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पे ही सुन रहे थे, होम डिपार्टमेंट के परमिशन से सुन रहे थे। तो उसमें जब ये बात आई कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया से राष्ट्रीय राइफल से एक लाइट मशीन गन लेके भगोड़ा वहां से सैनिक जो है वो भागा हुआ है, और वो इनको बेचना चाहता था, और ये फोन कॉल्स में कह रहे थे कि हमको वो किसी भी कीमत पर इस लाइट मशीन गन को बरामद करनी है, अपने पास लेनी है, खरीदनी है, क्योंकि इनका विरोधी जो थे कृष्णानंद राय, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी केवल राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी। तो उसकी क्षमता, मारक क्षमता ज्यादा होती है एलएमजी, उसको भेज देती। तो अगर मैंने ये रिकवरी उस समय न की होती तो 2 साल पहले कृष्णानंद जी की हत्या हो गई होती। और जब ये रिकवरी हुई तो पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, ये पूरा आतंकवादी पूरा कानून के तहत आता था, मैंने पोटा लगाया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि जिस चीज को गुड वर्क होना चाहिए था, शाम तक होते होते बैड वर्क हो गया। मुलायम सिंह जी की तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, जिसको ये सब समर्थन देते थे मुख्तार जैसे लोग, और उन लोगों ने, सरकार ने पूरा ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुख्तार अंसारी को किसी भी कीमत पर बचाना है, और मुझ पर दबाव बनाया जाने लगा कि आप कोटा कानून हटाइए, आप इसका नाम हटाइए। और जब मैं नहीं सहमत हुआ तो फाइनली मुझे 15 दिन बाद रिकवरी के ही अपना इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। और मैंने इस्तीफे में लिखा कि वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की जो चल रही है, वो वो मुख्तार अंसारी के इशारे पर चल रही है, माफियाओं के इशारे पर चल रही है। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम इसलिए नहीं भरते हुए कि किसी माफिया के कहने पर हम काम करेंगे। और ये चीज मैंने लिख के गवर्नर को भेजा, और उस समय मीडिया में ये चीज सामने आई, पब्लिक के बीच में आई, और लोगों को पता चला कि नहीं, वर्तमान सरकार किसके लिए काम कर रही है। चुनके तो आई है जनता के लिए, लेकिन माफियाओं के साथ खड़ी है। और यही कारण है कि आज ऐसी सरकारों को लोग खारिज कर रहे हैं। अब जनता जागरूक हो गई है। जो लड़का 20 साल पहले पैदा हुआ, आज वो युवा वोटर है, उसने दुनिया देखी है, इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबल उसकी सोच है, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिस मुस्लिम देश की बात दुबई की करते हैं, वहां पर आप देखिए किस तरह का कानून है, जरा सा भी कोई अपने इधर उधर नहीं कर सकता है, सख्त कानून है।
सिंगापुर जिसका उदाहरण दिया जाता था कि माफियाओं का राज रहता था, रातों रात वहां सब चेंज हो गया, खत्म हो गया और कहां से कहां प्रोग्रेस कर चल हो गई वहां पे। तो हमारे देश का भी युवा आज देख रहा है कि हमारा प्रदेश क्यों नहीं बदल रहा है, और यही कारण है कि आज योगी जी को दोबारा लोगों ने अपार समर्थन देके वापस लाया। आज यहाँ इन्वेस्टर समिति होती है तो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पे। अब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है और जनता इन लोगों को लगातार सर आंखों बैठा रही। मैं तो आज देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि सोशल मीडिया पर किस जी। तरह से कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने मुख्तार अंसारी के प्रति सिंपैथी दिखाई। ये दुर्भाग्य है उनकी बुद्धि का। मैं कहूंगा कि जी। शायद हर ली गई है, भगवान ने हर ली है। जब किसी का विनाश करना होता तो सबसे पहले उनकी बुद्धि हराते हैं। तो इन नेताओं की बुद्धि हर लिया भगवान ने और इनको अपने कर्मों की सजा इस वो इलेक्शन विवश ईयर में है स्वयं 2 महीने बाद शैलेंद्र पता जी। चल जाए कि इन लोग कहाँ पे हैं। जी नहीं नहीं, वो ये बात तो राजनीतिक हो गई, मगर मैं ये कहूंगा अंत में कि जिन राजनीतिक दलों को आज भी जो विवश हैं मुख्तार अंसारी को समर्थन करने के लिए, आतिक अहमद जैसे गैंगस्टर्स का समर्थन करने के लिए विवश हैं, क्योंकि इनकी कंपल्शन है, इन्होंने काम किया ऐसे लोगों के साथ। शैलेंद्र सिंह, मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विवेक साइलस हैं, तारिक अहमद लारी भी हैं एसपी से, आसिफ सोहेल है हमारे साथ, शांतनु गुप्ता है, एंड वी ऑल्सो हैव विद अस यशोवर्धन आजाद, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर IB and a very seasoned and respected IPS officer. Yashovardhan Azad, I want to start with you. Is there any doubt in your mind that it was because of political patronage that mafia dons like Mukhtar Ansari were allowed to flourish? That's the first question. The second point is that with the death of Mukhtar Ansari, has this come completely to an end? Or does this survive in pockets of Uttar Pradesh still, the mafia culture? Well, let me start, Arnab, by saying that it is a reflection of our polity that dreaded gangsters like Mukhtar Ansari flourished in some parts of our country, Bihar, UP, even other places. And definitely, they are backed by the ruling establishment. Otherwise, no mafia can actually survive without pockets of support. So this is extremely important, and that is why when any incident in respect of these people takes place, immediately there is either a politicization of the incident or a communalization. For the simple reason, if Mukhtar Ansari wasn't a member of party or jumping parties across and helping whenever he was helping himself, there would have been no outcry over his death in the jail. And the second part which you asked is that glorification is something which is extremely unfortunate. Let me tell you that there are only two critical issues relating to this death, and it shouldn't have been politicized. Number one is whether medical attention was given to him properly. And number two, whether he was poisoned, because that is the allegation. A judicial inquiry has been ordered. And as far as the poisoning goes, it's a toxicology report which gives you this. That comes after 4 weeks. And it will be absolutely clear in the judicial inquiry whether it has been done or not. And therefore, and the last point, which is very important, Arnab, I feel now, is that out of the 60 cases in which this man was involved, in 5 there was already conviction. I mean, if he were to live, he would be living throughout his life in jail. And it did not serve any purpose for the state or the police to knock him out. I mean, in fact, it was serving their purpose because he was getting convicted and it was improving the crime record. It was improving the law and order. It was giving a kind of a message to the other mafia that this kind of activities will not survive. And therefore, given these 2 points, it is obvious that such dreaded gangsters, if their rule is going to end, ultimately is going to be benefiting everyone,
it should go as a message, not only in UP, but also across the states in other places, because mind you, Arnab, there are certain parties still who are inducting these mafias in some places. And I want to, no, Yashovardhanji, I also want to bring in the aspect of the media. Before I continue this conversation, it is a known fact that sections of the media used to lionize these people. I don't know what they got out of them. There is one particular anchor who used to keep saying that every time I went to Atiq, Ahmed and Mukhtar Ansari, they served me very good biryani. They served me delicious food. These were people with a lot of tehzeeb, and they used to serve me very good tandoori chicken. And I kept telling Mukhtar Ansari that he makes delicious food. This is not accidental, Shantanu. This is deliberate. The attempt was made to give the impression that these are very good people. It was part of the same vote bank culture that the media also suffered from. And they were responsible for building Yaqub Memon, Dawood Ibrahim, Atiq Ahmed, Mukhtar Ansari and the whole lot of them. So do you want to make a comment on that? And also, Shantanu, along with that, the kind of statements that have come from Samajwadi Party and BSP today. Exactly. When I saw the Samajwadi Party Twitter handle today, I was so surprised and aghast that it started with Shri Mukhtar Ansari ji, and then they said whatever the Shok Sandesh they had to say. So for Samajwadi Party, he's not a gangster, he's not a terrorist Mukhtar Ansari, he's Shri Mukhtar Ansari ji. That's how Akhilesh Yadav treats him. And we know that how Mukhtar Ansaris and Atiq Ahmed the word, who should have been in jail, were in assemblies and parliament. And still they're catering. You know, in 2022 election, Mukhtar Ansari's son got the ticket from Samajwadi Party coalition. And in 2024 election, his brother is getting the ticket already. Right? So they're still, for the vote bank, they're still giving food to the family. And you rightly said, sections and sections of the media gave cover fire to them. Oh my God, as you said, the biryanis are good, the tehzeeb is good, right? And ask Puneet Rai, ask the son of Krishnanand Rai, that how hundreds and hundreds of families are destroyed by these gangsters in UP. And it was only post 2017 that how Yogi Adityanath pinned all these dreaded organized mafia. They were kidnapping mafia, cheating mafia, car chori mafia, rangdari mafia, multiple rapes and murders in their name, and they were some of them were not even FIR'd, some of them were not in jail, some of them flew jails, some of them flew courtrooms, and then these 10,000 cases, SITs are formed, and now UP is what UP is. That when UP does the investment summit, we get 34 lakh crores of investment, because now UP is a safe place, right? So I think though he died during the Ramzan month, I think so. It's a godly justice that happened yesterday in Uttar Pradesh. Yeah, and I'd like to ask Vivek Silas. Vivek, I can understand why you are supporting Tariq Ahmed Lari and Vivek. First, Vivek, because for a long time, for many years, you built up this mafia. They used to become your vote bank catchers. They used to do the contract extortion industry. They used to share the loot with you. They used to give you money. Plus, they used to terrorize local people that if you don't vote for this party or that party, then we will use the gun against you. You also allowed them to have their private armies, to have their private guns, private machine guns. Women were raped, kidnapped. There was open extortion and loot that was going on. Tariq Lari, these are realities. You cannot run away with these realities. And in fact, murder was, just a daily affair at that point of time. Police officials were killed. 400 bullets were pumped into Krishnanand Rai's body, right? And we know exactly what happened, the way in which Avdesh Rai was killed. He was one of the challengers at that point of time. But you used to call these people Bahubali. क्या बाहुबली है? एक नंबर के कायर हैं. इनको आप लोग तारिक लारी बाहुबली, रॉबिन हुड, नॉनसेंस. एक नंबर के कायर हैं, लोगों को मार के, लूट के, गन कल्चर ला के, और उसके बाद पता नहीं फिरौती करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे. What is the relationship between Samajwadi Party and BSP and people like Mukhtar Ansari? इनको रॉबिन हुड बताया जाता था. और ये मीडिया की भी प्रॉब्लम थी
रीढ़ की हड्डी नहीं थी, दे हैड नो स्पाइन, है ना, अभी भी नहीं बोलते, अभी भी वो बोलते मुख्तार अंसारी एक्स एमएलए, Atiq Ahmed politician. They will not call them a gangster. And OAC, by the way, Asif Sohail is saying Ghazipur's beloved son and brother. On Twitter he has said Ghazipur's beloved son and brother. अभी भी हीरोगिरी करने की कोशिश हो रही है शांतनु, अभी भी ये लोग यही बात कर रहे हैं. अभी तो सुधर जाइए विवेक साइलेंस. Why are you doing this? This is blood-soaked politics. A person doesn't become great because he's dead. Why do you Yes, call us then? yes, Vivek Silas. You don't allow us to. Yes. Now, Arnab, please listen to me very, very carefully and please give me uninterrupted time. My first question is to you. Has Mukhtar Ansari? The answer is absolutely no. He has never been in the Samajwadi. Second question. Has Mukhtar Ansari ever fought an election from the Samajwadi Party symbol? The answer is absolutely no. You talked about Abbas Ansari today, right? Very nice. I'm very glad you talked to him. I talked about him. He's Mukhtar Ansari's son. Who's he? He's an MLA. And he's an MLA from the NDA. He supports Mr. Narendra Modi. You should tell him. You should tell the viewers. They should know the reality. You should have the guts to tell that Mukhtar Ansari's son is a supporter of Mr. Narendra Modi, who is the Prime Minister of the country. Second, in your report, someone took the name of Mr. Brijesh. Any Tom, Dick and Harry can claim to be anybody's supporter. That doesn't, no, 1 minute. Any Tom, Dick and Harry can claim to be anybody's supporter. That's absolute rubbish. I'm getting a counter from Shantanu. Let him debate with you 1 versus 1. Wait. I have not completed. Let me expose him. Abbas Ansari. No, Arnab, you have to listen. आपको सुनना पड़ेगा. आपने बीजेपी वालों को पूरा मौका दिया तो आप पूरा मौका हमको देंगे. अखिलेश यादव forced Rajbhar party, Suheldev सुनना party पड़ेगा अर्नब. to give अर्नब आज ticket to सुनना Abbas पड़ेगा. Ansari. That's how सुनना पड़ेगा अर्नब. That's how he's MLA. अरे वो बोल रहे विवेक साहब मैं सबकी सुनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी मेरी सुननी पड़ेगी उसके बाद. हाँ बोलिए, कोई रोक नहीं रहा है. विवेक साहब बोलिए. आपने उन लोग को पूरा मौका दिया. हम लोग का चांस है तो पूरा बोलने दो. बहुत पीड़ा हो रही है आपको. अनलिमिटेड मौका दिया गया है. पीड़ा तो होगी ना कि श्री मुख्तार अंसारी जी मर गए. ये तरीका नहीं है. पीड़ा ये तरीका नहीं है कि आप गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ये काम करें. आप गैंगस्टर्स के साथ बैठ कर ये काम करेंगे. गैंगस्टर्स के साथ, कड़ी पारों के साथ बैठकर आप ये काम करेंगे. When was Mukhtar Ansari? आपको गुस्सा क्यों है? मुख्तार अंसारी मारेंगे, कौन क्या करेगा इस पर? Why are you angry? Mukhtar Ansari got arrested in 2005. It was the Samajwadi Party government. Why do you forget that? And Brijbhushan Singh has more cases than Mukhtar Ansari. 88 criminal cases. Brijesh Singh has 67 cases of heinous murder. You don't want to talk about him? You talk about the Congress, BSP and the SP. Why do you forget? Why do you forget Ram Prasad Gupta? Why do you forget Kalyan Singh? Why do you forget Mr. Rajnath Singh? They were also the chief ministers from Uttar Pradesh, from the Bharatiya Janata Party. Mukhtar Ansari was very much here in Uttar Pradesh. Why only blame the Samajwadi Party? Mukhtar Ansari fought the Lok Sabha election from the Bahujan Samaj Party. Because you people. From Varanasi. Because you people. Have to connect it because see, Atiq, I'm talking about two people. I'm talking about two people together. I'm talking about two people together. आपको सुनना पड़ेगा. अभी देखिए Vivek, listen. By the way, I am not only blaming you, I am also blaming sections of the media जो जाके बिरयानी खाते थे उसके साथ, हीरो बनाते थे इन लोगों को. मैं उनको भी ब्लेम कर रहा हूँ, आपको नहीं ब्लेम कर रहा. नहीं, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए. I have with me, okay, 1 minute, just 1 minute. Can I get Rajesh Kumar Pandey also on air, please? Can I get Rajesh Kumar Pandey on air? Can I get Rajesh Kumar Pandey on air? I'm listening you. Now, Rajesh Kumar Pandey is on air. Vivek ji, 1 minute. See Vivek. I think Mr. Vivek please understand. Mr. Vivek is shouting out all the political names. Mukhtar Ansari was very scared
Mukhtar Ansari was very scared of Yogi Adityanath and the BJP government in Uttar Pradesh. Mukhtar Ansari was very comfortable with SP and BSP and Congress. This is the reality. And if you are saying that Rajbhar's party had 12 to 15 MLAs and one of those MLAs is Mukhtar Ansari's son, then what this goes on to prove, you can have any political links at any level, but you will not be spared if you are a mafia don. That is the message which goes today. Now, my question to Rajesh Kumar Pandey is this. Mr. Pandey is a former IAS and founder member of the UPSTF, former IPS. Mr. Pandey, can you hear me? Yes, I can hear you. I'm hearing you. My straight question to you today is, Mr. Pandey, many people don't know, many youngsters, many people below the age of 30 today, 30, 35, may not know the details about Mukhtar Ansari. I think it's important for people to know. If I'm telling people tonight on the program that there was a time, viewers in this country, 15 to 20 years back, when gangsters and underworld dons had joint ventures with politicians, you could rape, extort, kill at will. This is a reality. और इस पे तारिक लारी को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं कि सच्चाई तो मिस्टर पांडे बोलेंगे. मिस्टर पांडे, is this true or not? You are a founding member of the UPSTF. Can you tell me what the situation was at that time? क्या आप बोलने नहीं दे रहे हो? मैं तो बिल्कुल आपको बोलने दूंगा. पांडे जी की बात सुन लीजिए मान्यवर. अर्नब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, 90 का दशक, 90s की बात मैं कर रहा हूं. 90 के दशक में पुलिस बहुत बैकफुट पे थी. 90 के दशक में मोबाइल फोन नहीं थे. 90 के दशक में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जैसे होनी चाहिए नहीं होती थी. मैनुअल जो आपके गवाह थे वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते थे. आप सिर्फ इसी से समझ लीजिए कि 17 साल की उम्र में पहला मुकदमा लिखा गया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ और पहला कन्विक्शन 44 साल बाद 2022 में हुआ. एक और ग्लेरिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब ये पहला जब कोयले को ब्लैक गोल्ड कहते थे उस जमाने में, मैं 90s की बात कर रहा हूं. मैं तैनात था उस समय सर्किल ऑफिसर सोनभद्र में. सोनभद्र की ओपन कोल फील्ड्स जो एनसीएल की थी, वहां से कोयला भर भर के नंबर 2 का चंदौली की कोयला मंडी में आता था. वहां उनकी रंगदारी के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में आपस में राइवलरी शुरू हुई. राइवलरी इस हद तक पहुंच गई कि 22 जनवरी 1997 को विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रूंगटा, जो इत्तेफाक से बहुत बड़े कोयला व्यवसायी भी थे, इन ग्रुप्स ने जब उनके ऊपर रंगदारी के लिए और तमाम चीज के लिए प्रेशराइज करना शुरू किया, मुख्तार अंसारी ने उनको किडनैप करवाया. मैं एफआईआर की बात कर रहा हूं. पहले वो किडनैप हुए, उसके बाद उनका मर्डर हो गया. मर्डर के बाद चार्जशीट हुए, चार्जशीट के बाद ट्रायल हुआ. उनका लड़का बार बार पुलिस को ये कंप्लेन करता रहा कि साहब मुझे और गवाहों को धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हमें अदालत तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है. 5 मुकदमे लिखवाए उसने. लेकिन फाइनली क्या हुआ, ट्रायल में ये बरी हो गए मुख्तार अंसारी. वहां से जो ये रार शुरू हुई है और जो लोग भी हैं वो उस समय का जो भी सिस्टम था या जो भी लोग थे शासन सत्ता में, उनके वरदहस्त का भी सुन लीजिए. एक और एग्जांपल, मैं एसटीएफ में ही था. एसटीएफ में मैं मुख्तार अंसारी को पूरे गैंग के साथ परसू कर रहा था. हेड्स ऑफ टू शैलेंद्र सिंह. शैलेंद्र सिंह को एलएमजी रिकवर करने के लिए, कोटा लगाने के लिए इस कदर फोर्स किया उस समय की गवर्नमेंट ने कि 15 दिन बाद उसे पुलिस सर्विस से रिजाइन करना पड़ा. यही उसकी परेशानी का अंत नहीं हुआ. उसे सरकारी मकान तुरंत खाली कराया गया, किराए के मकान लेने से रोका गया. जहां जहां वो किराए का मकान लेने जाता था, इसके गुर्गे पहुंच के उसका जो बयान रोते समय, एक ऐसा उस समय का बहुत ही ब्राइट मेरे साथ पोस्टेड था, बहुत ही ब्राइट अफसर था, बहुत ही ऑनेस्ट अफसर था.
ऑनेस्टी उसकी आज तक, इस घटना के इतने दिन बाद तक भी उसकी ऑनेस्टी जिसको देखनी है वो जाके देख सकता है। लेकिन उसे इतना प्रताड़ित किया गया सिर्फ इसलिए कि एलएमजी उसने मुख्तार से रिकवर की थी, मुख्तार के लोगों से, और उस एलएमजी का इस्तेमाल कृष्णानंद राय के मर्डर में किया जाना था। एलएमजी के रिकवर होने से जम्मू कश्मीर से वो चोरी से लाई गई थी। ये केस सब लोग जानते हैं, आप नेट पे ढूंढ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और उस डिप्टी एसपी की जिंदगी को नरक बना दिया गया जी। उसने हर तरह से कोशिश की कि भाई मेरी गलती बता दी जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये 2 साल कृष्णानंद राय की हत्या टल गई। 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसके कोई 15-20 दिन पहले उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, और खबर बाइलाइन खबर थी, भूपेंद्र पांडे जी ने लिखी थी, जो आज की तारीख में इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट हेड हैं। उन्होंने उसमें लिखा था कि बड़े फाटक यानी मुख्तार के घर पर कौन कौन लोग हैं, संजीव जीवा है, मुन्ना बजरंगी है, सम पांडे करके एक है, 5-6 लोगों के नाम लिखे, और ये लिखा कि वहां पर 5 AK-47 आ गई हैं, 2-3 AK-47 का वेट हो रहा है, और कोई बड़ा कांड होने वाला है। ये हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपी, और उसके बाद भी किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि इसका संज्ञान लेके द देन एसपी ऑफ द गाजीपुर he started extracting some information from the place and he was shifted within 24 hours. और 15 दिन बाद ही वो मैं 1 मिनट आपको इस वक्त राजेश जी मैं 1 मिनट के लिए आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पीयूष राय भी है। नहीं, तारिक लारी जी, आपको मुश्किल हो रही है क्या सुनने में ये सब बातें? पीयूष राय कौन है आप तो जानते ही होंगे। पीयूष राय कृष्णानंद राय जी के सुपुत्र हैं। इन सबका भाषण सुनना था तो वो तो मैं टीवी पे सुन लेता, जो मैंने 2014 ये भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं है, सच्चाई है। मैं यहाँ सुनने के लिए ऐसे लोगों को राजनीतिक पनाह मिल चुकी है इस देश में। जिस शैलेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं वो ब्रिजेश सिंह का गुर्गा था। क्या है? जिस शैलेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं वो ब्रिजेश सिंह का गुर्गा था, ये सबको मालूम है। वो भी तो बताए ना कि वो कितना बड़ा गुर्गा था ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश सिंह का कहने पे काम कर रहा था। ये भी साथ में बोलिए, ये भी बताइए, ये भी बताइए। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। तारिक लारी जी, I'll tell you, मैं बताता हूँ ना आपको। 1 मिनट, let me tell you the history. Let me tell you the history. लारी जी सुनिए। तारिक लारी जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। 1 मिनट मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप रुक जाएंगे, आप गतिरोधक बन रहे हैं मुझे रुक जाने को। आपको कह रहा हूं आप रुक जाइए, 2 मिनट में सब कुछ कह दूंगा। आई विल से एवरीथिंग, आई विल रिवील एवरीथिंग टुडे। यू सी व्यूअर्स, दिस प्रोग्राम मुख्तार अंसारी जेल में थे, वो हत्या तारिक लारी जी मैं बताऊंगा ना आपको तकलीफ क्या हो रही है। सब चीजें फैक्ट बताइए, ये भी फैक्ट बताइए कि तारिक अहमद की जान बचाने वाला मुख्तार अंसारी था। ये भी बताइए आप, ये भी बताइए। तो आपको अगर इफ यू आर ऑब्लाइज टू हिम तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल बात है। आज आपने गलत, आप उनके फैन है तो आप फैन बने रहिए। मुख्तार अंसारी, मगर आई वांट टू कॉल 1 मिनट तारिक लारी जी, एक माफिया डॉन एंड एक्सटॉर्शनिस्ट, एक माफिया डॉन, एक एक्सटॉर्शनिस्ट, एक मर्डरर, एक कन्विक्टेड मर्डरर के बारे में आप इस प्रोग्राम में आके कह रहे हैं मैं उनका फैन हूं, तो आप फैन बने रहिए। मैं आई एम इनवाइटिंग पीयूष राय राइट नाउ। 1 मिनट तारिक लारी जी, 1 मिनट प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। और 2000 लोगों का कातिल प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, सब पूरा दिख रहा है। क्रिमिनल तारिक लारी जी जस्ट वेट अ मिनट। मुख्तार अंसारी इज डेड। आप उनको ग्रेट नहीं बना सकते क्योंकि मुख्तार अंसारी इज डेड। कौन ठाकुर मारा गया कहीं पे? बट मुख्तार अंसारी इज डेड। कौन ठाकुर मारा गया है? कौन माफिया ठाकुर? मुख्तार अंसारी आपके साथ नहीं रहे अभी, आपके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है मुख्तार अंसारी। उसको तो वाई श्रेणी की सुरक्षा। चलिए देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रही है, आप भी बदल जाइए। वाई श्रेणी की सुरक्षा आप भी बदल जाइए। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, आप भी बदल जाइए। वेल डन।
माफियाओं को वाइड की सुरक्षा दी जाती है और तारिक अहमद लारी जिसके ऊपर आज Okay, now I want to go to Piyush Rai. Ladies and gentlemen, Piyush Rai, everybody is on, volume down. Piyush Rai, who is on the right-hand side of the screen, viewers, 2 minutes, and I'll get everybody back. Piyush Rai is the son of Krishnanand Rai. अब ये कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना. Krishnanand Rai was an MLA representing Mohammadabad Assembly constituency, which is in Ghazipur district. Okay. He defeated Mukhtar Ansari's brother, Afzal Ansari, and he won the Mohammadabad constituency of Ghazipur district. Now, when he did that, he was a threat to the illegal businesses of Mukhtar Ansari. In 2005, Piyush Rai's father, Krishnanand Rai, was coming home when he was attacked. और यही मुख्तार अंसारी, ये इनके समय में, they used to have AK-47s, and Piyush, I just want to share this with you, 400 bullets were pumped into your father's body. 400 bullets. And आज भी ऐसे लोग हैं जो इनको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो I just want to ask you, when you hear these people, what would you like to say to them? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? Actually, thank you, Arnab, for inviting me on your show. And really, I'm not surprised by, these people are making heroes of Mukhtar Ansari. I'm totally not surprised by them because I was listening everybody's views on his past karma. And I don't know the name, but some of the, one member of the panelists, I think he is the spokesperson of SP. He was referring that Mukhtar Ansari was never a member of Samajwadi Party, and I'm sure that he is right. He was never a member of Samajwadi Party. So just ask him, does he believe that Mukhtar Ansari is a mafia and gangster or not? Just ask him one thing. Is Mukhtar Ansari or was Mukhtar Ansari a mafia or a gangster or not? The gang number IS 191 was on his name, and the people who were involved in those gangs were the mass murderers like Munna Bajrangi, Sanjeev Jiva, Rakesh Pandey, Hero, and there were many people who were involved in his gang. And his gang was still now active till date. And we don't know what they are going to do in the future, but are these Samajwadi Party leaders or any other political parties, what they are doing with this social status between the people, that by making a hero out of Mukhtar Ansari, they are demeaning their basic line of politics that if somebody is a criminal, whether he belongs to any caste or any religion, he should be always told that he is a criminal, whether he is of any caste or any religion. One of the Samajwadi spokesperson was asking, did any Chhatri was ever killed? Yes, Prem Prakash Singh Bunna Bajrangi was a Chhatri. He was killed in the jail. There was a judicial investigation. And he was also all the members who killed your father has been killed. And yes, all the members who killed your father has been killed. He was a Brahmin. Am I right or wrong, Mr. Piyush? Asked whether he was a Why not Bridget Singh killed till now? Government never Why not makes Chulbul Singh? These issues like what is the religion of a criminal. We always know. Your mother has said, Baba ji ne meri sun li. Your mother said, Baba ji ne mere saath insaf kiya hai. Baba ji ne meri sun li. There were, these people were also there at that time. And no issues was raised why a Brahmin Bumiyar criminal, why a Brahmin Bumiyar MLA was killed and his shikha was cut down from forehead. असलियत निकली ना मुंह से पीयूष जी कि आपके पिताजी क्रिमिनल थे. असलियत निकली आपके मुंह से कि आपके पिताजी क्रिमिनल थे. ये देखिए ये असलियत है. ये असलियत है पीयूष जी के मुंह से निकल रही है. एक समाज को क्यों बेइज्जत किया गया, उसकी शिखा काट के उसके सर पे 400 गोलियां चलाने के बाद उसके सर पे पॉइंट ब्लैंक से हर व्यक्ति के सर पे 5-5 गोलियां क्यों मारी गई,
क्यों नहीं ये सब प्रश्न समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के जो भी लीडर्स हैं या कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं, उन लोगों ने ये प्रश्न उस समय इनके भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, क्यों नहीं पूछे उनसे कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कैसे विधायक की हत्या की जा रही है। और आपको अगर ये लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के नहीं मेंबर रहे हैं तो आपके अखिलेश यादव की फोटो मुख्तार अंसारी के घर के क्यों इतने करीबी फोटो उनके साथ हैं? क्या रिश्ते रहे हैं? जब वो बसपा में रहे हैं तो उनसे उनके साथ नजदीकी बढ़ाने के क्या कारण है? अर्नब, आई थिंक द होल रीजन बिहाइंड दिस इज द ओनली मेयर पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक एंड तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश के पॉलिटिक्स में एक ही चीज तय किया है कि जब जब चुनाव होंगे तब तक वोट बैंक के लिए ऐसी पार्टियां, ऐसे दलें अपने इस्तेमाल के लिए वोट बैंक की राजनीति करती रहेंगी। उनके लिए अपराधी का हमेशा मजहब निकल के आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर उनका काम निकल जाएगा, फिर वो अगले 5 साल का इंतजार करेंगे कि कब किस अपराधी के मजहब के बारे में चर्चा की जाए। तो ये दशा है पॉलिटिक्स की, ये थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं, पर मेरा मानना है कि एक मिनिमम डिकोरम होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, जो हम और आप एक तय करें कि जो अपराधी इस समाज के लिए हानिकारक है तो उसके बारे में खुले तौर पे हमें कहना होगा कि हाँ ये अपराधी है। मैं मुख्तार अंसारी इसलिए अपराधी है क्योंकि वो नहीं बिल्कुल, देखिए इट इज टाइम टू स्पीक ओपनली। मैं पहले की बात हो रही है कि उनकी हत्या लारी जी मैं एक बार आई वांट टू गो टू आसिफ सोहेल। हत्या होने पे सब खुश होते हैं। आई वांट टू गो टू आसिफ सोहेल फॉर 1 मिनट बिकॉज़ ही इज नॉट स्पोकन। आज वो मरे हैं, कल आप मरेंगे, परसों मैं मरूंगा। आसिफ सबकी बराबर है। did people like did some political parties, whether SP or BSP, outsource Muslim vote banks to people like Atiq, Ahmed and Mukhtar Ansari or not? कि आप अपना दबदबा न बनाए रखिए, आप पैसे बनाइए, खूब एक्सटॉर्शन कीजिए, फिरौती कीजिए, किडनैपिंग कीजिए, मर्डर कीजिए, ठीक समय पे हमें वोट बैंक ले आइए और हमको रेगुलर पैसा देते रहिए। यही तो बात आती है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री, ऐसा ही तो चल रहा था देश। So the communal angle is there, the business angle is also there. Yes, Asif Sohail. बॉन्ड से चल रहा है एक्सटॉर्शन। अर्नब, अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से एक्सटॉर्शन हो रहा है। मैं जवाब दूंगा अर्नब इसका। देखिए, एक तो पहली बात फिलोखत का जो मुद्दा है, सुनिए सर मुझे बोलने दीजिए आप। फिलोखत का जो मुद्दा है मुख्तार अंसारी के मौत के ऊपर, देखिए यूपी हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट है जिसमें कस्टोडियल डेथ 900 के ऊपर हुए हैं। ठीक है, कभी बंदूक की गोली से मारा जाता है तो कभी जहर दे के मारा जाता है, कभी बुलडोजर से मारा जाता है, कभी नाम पूछ के मारते हैं, कभी इबादत गाहों को तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, बंदूक से चला जाता है, संविधान तो खत्म हो चुका है। और रही बात, देखिए मैं मुख्तार अंसारी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो जो थे गलत थे, पर उनको मारने का हक किसी को नहीं था। कानून उनको सजा दी थी और वो कानून के मुजरिम थे, वो सजा काट रहे थे। ज्यादा पीयूष जी के फादर जो उनको जो मरे हैं वो बहुत ही गलत बात है। उनकी भी मौत के ऊपर हमें अफसोस जाहिर करना चाहिए। देखिए कोई पार्टी का आदमी कोई दूध का धुला नहीं है, ये लोग को इस्तेमाल किया गया है, भाजपा हो या दूसरे पार्टी हो, कोई भी वक्त के ऊपर हर किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले गैंगस्टर का गुंडागर्दी चल रही थी, आज पॉलिटिकल गुंडागर्दी चल रही है। आज फर्क क्या रह गया है बताइए आप? लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। एक पॉलिटिकल किलिंग सिर्फ एक टारगेट मुस्लिम वक्त के ऊपर क्यों हो रहा है? कैसे आपको पता कि मारा है? यशोवर्धन आजाद, कैन दिस काइंड ऑफ एलिगेशन बी मेड विदाउट एनी प्रूफ? आप गलत बोल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। हाउ कैन यू से मारा गया? ही हैड हार्ट अटैक, इनको हार्ट अटैक हुआ, आप कह रहे हैं मारा गया? इन लोगों ने 9000 के ऊपर लोग कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट थोड़ी कर रहा है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ। ये बोल कानून से चलता है ना, बल्कि किसी के नागपुर यूनिवर्सिटी से चलता है। बनाया जा रहा है जैसे उनका मर्डर किया गया है। भाई कोई सरकार डिसाइड करेगी किसको कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए। इलेक्शन का टाइम है, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये हुआ है, समझ रहे हैं आप? अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? यशोवर्धन आजाद, आई थिंक गलत तो गलत बोलना, this is an irresponsible allegation. I think you must respond to that. It's absolutely wrong. And in fact, I have said that even the state does not benefit by killing him because he had already been convicted in 5 cases. It neither helps the police and it doesn't help the state also. The other thing is, the most important thing is whether it was poisoning. That is an allegation which has been made. That will come out in the toxicology report. What is the judicial inquiry for?
and therefore to give a judgment already before. सर मेरा सवाल ये है उनकी Exactly, autopsy Vivek. इन कैमरा Listen to की that. गई क्या? उतना अगर है तो उनकी autopsy इन कैमरा करी जानी चाहिए था. अब वो सैंपल्स रखेंगे, इंक्वायरी होगी, सब होगा, ये सब बातें हैं, बेकार बातें हैं होने की. जो होना था हो गया है. किसी को गोली से मार रहे हैं, किसी को जहर से मारा जा रहा है. गलत बात है ये. लेकिन डॉक्टर से आप जो चाहे लिखवा लीजिए, मुझे भी तरीके मालूम है सब. आप सुने नहीं तो बात दूसरी है. ये आप पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं सुहेल साहब, वो टॉक्सिकोलॉजी के रिपोर्ट में 4 सप्ताह बाद जुडिशियल इंक्वायरी में आ जाएगी. उसको तो छिपा नहीं सकते हैं ना, वो तो जज की बात है. और जो पहली बात है मेडिकल अटेंशन की, वो भी उसमें आ जाएगी. 950 के ऊपर लोग जो सो कस्टोडियल डेथ हुए सारे. Okay, viewers, I'm closing this debate at this point because I've overshot the time limit. I just want to say to everyone, Atiq Lari, and also to to Mr. Vivek Silas, that don't see he is and was a gangster. Don't lionize him. Don't try to build a sympathy campaign for him. Nobody has any sympathy for Mukhtar Ansari. I'm saying the man doesn't deserve sympathy, Mr. Lari. You don't need to build up sympathy for him. Okay, viewers, I will close it there. When I come back, viewers, from Mukhtar Ansari, we'll go to the story that's doing the rounds. You may have heard that the United Nations, that the United States have all been condemning Kejriwal's arrest and the Congress tax notices. When I come back on the other side, I'll tell you why I think both the questions and the answers being reported in the media are planted and false in a few minutes.